भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, असम के माननीय राज्यपाल अध्यापक जगदीश मुखी जी, मोर मंत्रीसभार सतीर्थ अतुल बरा डांगरिया, रंजित कुमार दास, उर्खागौर गौरा ब्रह्म डांगरिया और सभात उपस्थित सुधीबृंद, আজি এটা মহৎ উদ্দেশ্য ৰাখি আমি ইয়াত সমবেত হৈছো। অসম বুৰঞ্জীৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যয়নৰ স্মৰণত আজি ভাৰতৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। অসম বুৰঞ্জীৰ এই নিৰ্ণায়ক ঘটনাটো আছিল 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত উত্তৰ পূব ভাৰতলৈ সুদূৰ म्यांमाৰৰ চান প্ৰদেশৰ পৰা অহা টাই আহোম সকলৰ এটা দলৰ আগমন। এই টাই সকলে পৰৱৰ্তী 600 বছৰত অসমত এটা राजशासन प्रवर्तन करिছিল। आज के ये महान उद्देश्य को सामने रखकर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। असम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण अध्याय के स्मरण में आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारा बीच में उपस्थित है। असम का इतिहास का ये घटना 1228 ख्रीष्टाब्द की, जब उत्तर पूर्व भारत में सुदूर म्यांमार के शान प्रदेश से टाई आहोम समुदाय का आगमन हुआ था। इस टाई समुदाय ने 600 सालों तक असम में शासन किया था। मध्ययुगर आहोम सकলৰ शासन आसिल एशिया महादेशर एटा महत राजनैतिक शक्ति। তেওঁলোকৰ शासनकाल आसिल अलेख युद्ध और अजुत साहसर काहिनीरे परिपूर्ण। तेने दुटा साहसिकतापूर्ण और वीरत्वपूर्ण काहिनी आसिल आलाबৈ रण और शराइघाटर रण। आलाबৈ आसिल অসমীয়াসকলৰ देशप्रेমৰ उज्ज्वलतम निदर्शन। आनहाते शराइघाटर रण आसिल অসমীয়াৰ शौर्य बीर्य और वीरत्वर अम्लान काहिनी। এই অম্লান কাহিনীৰ মহানায়ক আছিল লাচিত বৰফুকন। লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল 1622 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 নৱেম্বৰত। পিতৃৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম কুন্তি মৰাণ। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল শিৱসাগৰৰ গড়গাঁৱত। লাচিত আছিল মোমাই তামুলীৰ সপ্তম পুত্ৰ। আহোম ৰাজশাসন ব্যৱস্থাত লাচিত আছিল প্ৰথমে ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পদত, তাৰ পৰা তেওঁ দুলীয়া বৰবৰুৱা, শিমলুগুৰীয়া ফুকন আৰু দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা আৰু শেষত বৰফুকন হৈছিল। বৰফুকনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত লাচিতে 1667 চনত ইটাখুলিৰ ৰণত মোগলক পৰাভূত কৰি মোগল সেনাপতি সৈয়দ ছানা আৰু সৈয়দ ফিৰোজ সহিতে কেইবা হাজাৰো সেনাক বন্দী কৰে। লাচিত বৰফুকনে মোগলৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও জব্দ কৰে। এয়া আছিল আহোমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস। আৰু ইয়াৰ পিছত স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহই গুৱাহাটীত নামনি অসমৰ ৰাজধানী পাতে। এই পৰাজয়ে মোগলক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছিল। ইয়াৰ পিছত কেইবাবাৰো আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয়। এই ৰণসমূহৰ ভিতৰত 1669 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আলাবৈ ৰণ আৰু 1671 খ্ৰীষ্টাব্দৰ শৰাইঘাটৰ ৰণ বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। 1669 খ্ৰীষ্টাব্দত দদৰাৰ ওচৰত আলাবৈ পাহাৰৰ সমীপত হোৱা এই যুদ্ধত এদিনতে প্ৰায় 10,000 অসমীয়া সৈন্যই প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হৈছিল। মোগল সেনাপতি ৰাম সিংহই তেতিয়া দদৰাৰ ওচৰৰ আলাবৈ পাহাৰৰ ওপৰত এক সুচল ঠাইত কোঠ মাৰিছিল। মোগল অশ্বাৰোহী সৈন্যৰ বাবে অতিকৈ সুচল এই ঠাইত লাচিত বৰফুকনৰ অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ৰধৰ সিংহৰ নিৰ্দেশমৰ্মে অসমীয়া সৈন্য যুদ্ধত নামিছিল, যাৰ কৰুণ পৰিণতি আছিল আলাবৈ ৰণত ভাৰতীয় আৰু অসমীয়া সেনাৰ পৰাজয়। জন্মভূমিৰ হকে এদিনৰ ৰণত 10,000 সেনাই জীয়নদান দিয়া এক নজিৰ বিশ্বৰ ইতিহাসতে বিৰল। আলাবৈ ৰণ আছিল অসমীয়া সেনাৰ দেশপ্ৰেমৰ এক অপূৰ্ব চানেকি। सन 1669 में ददरा के पास आलाबৈ पहाड़ के नज़दीक हुए इस युद्ध की एक ही दिन में ही करीब 10,000 असमिया सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुगल सेनापति राम सिंह ने उस समय
ददरा के पास आलाबोई पहाड़ी की एक सुविधाजनक स्थान पर किले के निर्माण किया था। लासीत बरफुकन की अनिच्छा के बावजूद स्वर्गदेव चक्रधर सिंह के निर्देश में असमिया सेना इस स्थान पर युद्ध के लिए गई, जो मुगल अश्वारोही सेना के लिए बहुत सुविधाजनक थी, जिसका दुखद परिणाम आलाबोई का युद्ध में असमिया सेना का हार थी। ये दुनिया का इतिहास में एक असाधारण घटना है जहां एक ही दिन में 10,000 सैनिकों ने मातृभूमि की लड़ाई में अपनी जान दे। आलाबोई का युद्ध असमिया सेना का देशभक्ति का एक अपूर्व पहचान है। आलाबोई रणत एकेलगे बृहৎ संख्यक सेना हेरुवाई आहोम सेनार मनोबल यथेष्ट भांगी परिছিল। शराइघाट युद्धर शेषर फिले मुगलर विराट सैन्य बाहिनीर आगत आहोমৰ सैन्यই जयर आशा बाद দি পিছ হুহুকিবলৈ आरम्भ কৰিছিল। সেই সময়ত লাচিত বৰফুকনৰ অতিপাত জ্বৰ উঠি আছিল। সেই গাৰে এখন নৌকাত উঠি মুগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু সৈন্যসকলৰ হত মনোবল জগাই তোলাৰ উদ্দেশ্যে কৈছিল, যদি তোমালোক উভতি যাব খুজিছা যোৱা, কিন্তু স্বৰ্গদেৱে মোক এই দায়িত্ব দিছে, মই শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজিম। মুগলে মোক লৈ যাবলৈ দিয়া, তোমালোকে মাত্ৰ স্বৰ্গদেৱক কবা মই তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰি शेष मुहूर्तলৈ যুঁজ দিছো। आलाबोई का युद्ध का बड़े पैमाने में सैनिक को खोने का बाद आहोम सेना का मनोबल टूट गया था। सरायघाट का युद्ध का अंत तक मुगलों का विशाल सेना के सामने आहोम के सेनाओं ने जीत की उम्मीद छोड़ दिए थे। उस समय लासीत बरफुकन तेज बुखार से पीड़ित थे। यह उसी हालत में एक नाव में चढ़कर मुगलों को खिलाफ युद्ध का लिए आगे बढ़े थे और अपना सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए कहा था, यदि आप लोग जाना चाहते तो जाइए, लेकिन स्वर्गदेव ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं अंतिम समय तक लड़ता रहूंगा। मुगलों को मुझे ले जाने दो। तुम लोग स्वर्गदेव को वही बताना कि मैं उनके आज्ञा पालन करते हुए अंतिम समय तक लड़ता रहा। बरफुकনৰ সাহস আৰু উদ্দীপনাময় কথাত সকলো উৎসাহিত হৈ পৰে। লগে লগে আন বিষয়াসকলেও মুগলৰ বিৰুদ্ধে নাও মেলি দিয়ে। প্ৰকৃততে শৰাইঘাটৰ ৰণত লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত আহোম সেনাৰ জয়লাভে অকল অসমৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰাই নহয়, সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াক আগ্ৰাসী শক্তিৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল। শৰাইঘাট যুদ্ধ জয়ৰ পিছত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হৈছিল। যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ তীৰকপে জ্বৰ উঠি আছিল আৰু নৰিয়া দেহেৰে তেখেতে যুদ্ধ কৰিছিল। স্বৰ্গদেৱ উদয়াদিত্য সিংহই 1672 চনত যোৰহাটৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ আঁতৰত হোলোঙা পাৰত লাচিতৰ সমাধি বা মৈদাম নিৰ্মাণ কৰে। শৰাইঘাটৰ ৰণ আছিল বিশ্ব ইতিহাসৰ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আজি অসম চৰকাৰে সেই বিশ্ব ইতিহাসৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনাটোকে 400 বছৰ পিছত আকৌ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিব খুজিছে। লাচিত আৰু আহোম সেনাৰ পৰাক্ৰমে মুগলক পৰাজিত কৰিছিল। মুগল সেনাক দক্ষিণ পূব এছিয়ালৈকে আগবাঢ়ি অহাৰ পথত এক বিৰাট বাধাৰ পাচিৰ হিচাপে থিয় হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষত যিসকল হিন্দু মহাবীৰে মুছলমানসকলৰ মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল, তাৰ ভিতৰত আছিল লাচিত অন্যতম আৰু একক। আজি 400 বছৰ পিছত কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে লাচিত বৰফুকনক পুনৰ এবাৰ আকৌ সোঁৱৰণ কৰিছে। আজিৰ অনুষ্ঠানতে ভাৰতৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়াই আলাবৈ যুদ্ধ স্মাৰকৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। এই স্মাৰকটোত আহোম যোদ্ধাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা হেংদানৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এটা সুদৃশ্য পুখুৰীৰ জলভাগৰ মাজৰ পৰা উঠি অহা এই 100 ফুট উচ্চতাৰ হেংদানখন আহোম বীৰ সেনানীসকলৰ শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ স্মাৰক হৈ থাকিব। আজিৰ সভাতে মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে যোৰহাটত লাচিতৰ সমাধি নৰহিলৈদাৰী গাঁৱত আন এক স্মাৰকৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিব।
এই স্মাৰকটো সমাধি ক্ষেত্ৰ বৰ্তমান 4 বিঘা মাটিৰে সমাহিত হৈ আছে। ৰাইজৰ অনুগ্ৰহত ইতিমধ্যে আমি 50 বিঘা মাটি এই সমাধিটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। 150 ফুট ওখ লাচিতৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি সেই যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰ গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, সমাধিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ লগতে প্ৰকল্পটোত থাকিব লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন আৰু কীৰ্তিৰ প্ৰতিফলন হোৱাকৈ এটা সংগ্ৰহালয়। এই সংগ্ৰহালয়ৰ আলোকচিত্ৰ, চলচ্চিত্ৰ আদিৰে তেখেতৰ জীৱন কীৰ্তিক নতুন প্ৰজন্মৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণকৈ তুলি ধৰা হ'ব। লগত থাকিব এটা যুদ্ধ সংগ্ৰহালয়, য'ত আহোম ৰাজ্য আৰু লাচিত বৰফুকন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বয় বস্তু সংৰক্ষণ কৰা হ'ব। এটা সেউজ পৰিৱেশৰ মাজত পুথিভঁৰাল, গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰেক্ষাগৃহ আদি স্থাপন কৰা হ'ব। जोरहाट के नरा हिलोईदारी गांव में स्थित लासित बरफुकन के समाधि स्थल को आकर्षक बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। लासित बरफुकन के वर्तमान के मैदान 4.3 बीघा, लगभग 1 एकड़ से थोड़ी ही ज़्यादा भूमि में बसाया जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग 50 बीघा नई भूमि आवंटित किया हूँ। इस मैदान का आकर्षण का मूल केंद्र बिंदु होगा लासित बरफुकन का समाधि का सामने उनके 150 फुट ऊंचाई का एक कांच का मूर्ति। इस संग्रहालय में आलोक चित्र, चलचित्र आदि के जरिए उनके जीवन कीर्ति को पर्यटकों का सामने लाया जाएगा। इसके साथ यहाँ एक युद्ध संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जहाँ आहोम राज और लासित बरफुकन के सम्बलित अलग अलग चीजें संरक्षण किए जाएगा। लासित बरफुकनक स्मरण কৰিবলৈ भारत सरकारे 1999 सনৰ পৰা प्रति बছৰে भारतर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एकाडेमीत श्रेष्ठ कैडेट जनक लासित बरफुकनर सोनर पदक प्रदान करी आहिছে। लासित बरफुकन के स्मरण करने के लिए भारत सरकार ने 1999 से प्रति वर्ष भारत के राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लासित बरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित करते आ रहा है। लासित बरफुकन असमिया जातीय सत्ता के सर्वश्रेष्ठ अवतार है। मुसलमानों का आग्रासन में बाधा देने के लिए मध्यकालीन भारतवर्ष में जितने हिंदू वीर वीरता के लड़कर सफल हुए थे, उनमें से पूर्वोत्तर भारत के आहोम सेनापति लासित बरफुकन अन्यतम थे। वीरता, साहस और देश प्रेम के उज्जवल प्रतिभाओं से युक्त लासित बरफुकन की तुलना सर्वभारतीय स्तर और विश्व स्तर के वीर योद्धाओं का साथ की जाती है। लासित बरफुकन के 400वीं जन्म जयंती समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उपस्थित होकर आसाम के इस वीर योद्धा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट किए हैं। आलावई युद्ध स्मारक की आधारशिला और लासित बरफुकन का मैदान में मरम्मत और सौंदर्य वृद्धि के कार्य का माननीय राष्ट्रपति ने शुभारंभ कर लासित बरफुकन और 10,000 असमिया शहीदों के प्रति उन्होंने आंतरिक श्रद्धा प्रकट की है। असम वासियों का ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के समक्ष कृतज्ञ है। मैं राज्यवासियों का ओर से महामहिम राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूँ। 3 दिवसीय यात्रा पर असम आने वाला महामहिम राष्ट्रपति का मैं स्वागत करता हूँ। हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारा 20 उपस्थित होने वाले महामहिम राष्ट्रपति को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय असम। धन्यवाद।